Hello students, I am Bani, your English facilitator at Learn Forward by Feathercap, and today we'll be discussing the chapter, The Dying Detective. So let us start. Now, this play focuses mainly on Sherlock Holmes himself, who claims to be quite ill and about to die from a Sumatran disease. Feeling near death after having contracted a rare and usually fatal Asiatic disease, he is determined to solve one last murder case before he passes on. So let us read. तो जो Sherlock Holmes था ना, he was a very famous detective. You might have heard his stories, you might have read his stories. These are the characters. जो Sherlock Holmes है, he is a famous detective. डॉक्टर वॉटसन उनके फ्रेंड हैं या कोलीग हैं. Culverton Smith, he is a plantation owner. Inspector Morton, he is a police officer. And one another character in the story is landlady of Sherlock Holmes. Now, this story is divided in different scenes. पहले scene 1 आएगा, फिर scene 2 आएगा, फिर scene 3 आएगा. So we'll discuss this according to that. Now, scene 1. So in scene 1, there's the landlady of Sherlock Holmes. Landlady of Sherlock Holmes and Dr. Watson, Sherlock Holmes' friend or colleague. Now, they're standing on a street and they're discussing something. So the landlady, she says, he's dying, Dr. Watson. For 3 days, he has been sinking and I doubt if he will last the day. I told him that I would bring a doctor, but he said he would only see you. You shouldn't waste an hour in coming to him, sir, or you may not see him alive. तो अभी जो लैंडलेडी है ना, इसमें शी इज रेफरिंग टू शर्लॉक होम्स. तो वो बता रही है, वो डॉक्टर वॉटसन को बोल रही है कि आपका जो फ्रेंड है ना शर्लॉक, ही इज डाइंग एंड फॉर 3 days आई एम सीइंग कि वो मर रहा है एंड ही इज स्लोली पासिंग अवे. एंड व्हेन आई टेल हिम कि एक डॉक्टर को बुलाती हूँ, so he replies that I don't want to see any other doctor. I just want to see my friend Dr. Watson. So he's not ready to see anybody else, any other doctor, and he's calling out for you. So she says to Dr. Watson that if you do not come right away, he might die and he might not be able to see the end of the day. So you should come right away. Now Watson says, I will go to him at once. तो उसके जो फ्रेंड है शर्लॉक होम्स के फ्रेंड वॉटसन, वो कहता है लैंडलेडी को कि बस मैं अभी ही जा रहा हूँ. तो यही था सीन 1. लेट्स स्टार्ट विद सीन 2. इन शर्लॉक होम्स बेडरूम. अब जो सिनेरियो है वो कहाँ पर है, कहाँ पर प्लेस्ड है? शर्लॉक होम के बेडरूम पे. होम्स, stand right back. If you approach me, Watson, I shall order you out of the house. तो शर्लॉक होम्स अपने फ्रेंड वॉटसन को बोलता है कि अगर तू मेरे पास भी आए तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा. अब वो क्यों बोलेगा ऐसा कि मैं उसका फ्रेंड अगर उसके पास आ रहा है तो उसको वो घर से बाहर क्यों निकालेगा? वॉटसन, बट वाई, क्यों? होम्स, it is for your own sake, Watson. I know what is wrong with me. I have a horribly contagious disease that I picked up from a ship in the docks. Keep your distance and all is well. If you stand over there, I will talk. If you do not, you must leave the room. तो जो होम्स है, शर्लॉक होम्स है डिटेक्टिव, ही सेज टू हिज फ्रेंड वॉटसन कि मैं तेरे लिए कह रहा हूँ वॉटसन, आई नो व्हाट डिजीज आई एम सफरिंग फ्रॉम एंड इट इज अ कंटेजियस डिजीज. कंटेजियस डिजीज का मतलब होता है जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है एंड दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इफ यू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन हु हैज अ कंटेजियस डिजीज, यू कैन ऑल्सो हैव दैट डिजीज. तो वो कहते हैं कि आप मेरे पास मत आओ, बिकॉज इफ यू कम नियर मी देन यू विल ऑल्सो हैव दिस डिजीज दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम एंड आई डोंट वांट टू सी यू इन दिस कंडीशन. सो वो बोलता है कि मेरे को ये शिप में से डिजीज मिली थी, किसी बंदे से मिली थी, एंड अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो, अगर तुम डिस्टेंस नहीं रखते हो, देन तुमको मैं घर से बाहर निकाल दूंगा एंड यू विल नॉट बी अलाउड इन माई होम. वॉटसन, बट इफ आई कांट ट्रीट यू, हाउ कैन यू गेट बेटर होम? सो डॉक्टर वॉटसन कहता है, वो डॉक्टर थे तो वो कहते हैं कि अगर मैं तेरे को ट्रीट नहीं करूंगा, आई एम अ डॉक्टर, सो आई डू नॉट ट्रीट यू, देन हाउ विल यू गेट बेटर? आई डोंट वांट यू टू डाई दिस वे. Now Holmes says, go and fetch Mr. Culverton Smith. ये जो मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ थे, ही वॉज अ प्लांटेशन ओनर, राइट? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. ये कहाँ रहते थे? ऑफ 13 लोअर बर्ग स्ट्रीट. इट मे सरप्राइज यू टू नो दैट दिस मैन
Mr. Smith has better knowledge of this disease than any doctor on earth. He's a planter and and a well-known resident of Sumatra and is now visiting London. So जो शेरलॉक होम्स है वो अपने फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन को बोलता है कि एक बंदा है, उसका नाम है मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ. He is basically a plantation owner. And second, a resident of Sumatra. अब what is Sumatra? It is a place एंड जैसे कोरोना वायरस था एंड हम मतलब कितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ था, तो वो जो डिजीज थी वो चाइना से आई थी. सो ऐसे ही जैसे वो एक वायरस चाइना से इवॉल्व हुआ था, ऐसे ही जो ये सुमत्रन डिजीज जो शेरलॉक होम्स को हुई थी, इट इवॉल्व्ड from the place Sumatra, and this person Culverton Smith, he was a resident of this place Sumatra. So he had so much knowledge of this disease and he had made so much discoveries on how to treat this disease that he was the only person who knew कि इस disease का क्या उपाय है, कैसे ये डिजीज क्योर हो सकती है. सो व्हाट इज द क्योर ऑफ दिस डिजीज. तो Sherlock Holmes कहता है डॉक्टर वॉटसन को, अपने फ्रेंड को, that go and fetch this person, he lives here and you will be surprised to know that any doctor on the earth does not have as much knowledge about this disease as much as Mr. Culverton Smith. Although he is not a doctor, but he has made a lot of discoveries on this disease. He lives in Sumatra, he is a resident of Sumatra, but he is now visiting London. Watson, he's a plantation owner then. तो उसका फ्रेंड वॉटसन बोलता है कि वो एक प्लांटेशन ओनर है फिर. सो ही सेज यस, ही इज अ प्लांटेशन ओनर. यस, एंड an outbreak of this disease upon his plantation, which was far away from any hospital, made him studied himself with some rather far-reaching consequences. So now Holmes says that yes, ये जो सुमत्रन डिजीज है ना, ये कैसे हुई थी, ये इसके प्लांट्स पे आउटब्रेक हो गया था because he lives in Sumatra and this disease was first outbroken on his plantation. So he made a lot of discoveries, he researched it and he found out how to cure this disease. So Watson, so he'll know how to cure you. तो उसको पता होगा कि आपको क्योर कैसे करना है. Holmes, if you could persuade him to come here and share with us his experience of this disease, I have no doubt that I'll be cured. Plead with him, Watson. There has been argument between us. तो होम्स कहते हैं, शर्लॉक होम्स कहते हैं, इफ यू कुड परsuade हिम, अगर तुम उसको मना पाओ यहाँ पर आने के लिए और हमें बता पाए वो कि कैसे ये डिजीज क्योर करी जा सकती है, आई नो दैट आई विल बी क्योर्ड. उसे बहुत रिक्वेस्ट करना, बिकॉज मेरी एंड उस बंदे की मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ की एक बात पे आर्ग्यूमेंट हुई थी, एक लड़ाई हुई थी. सो ही विल नॉट कम टू विजिट मी ऑल ऑफ अ सडन, सो यू विल हैव टू रिक्वेस्ट हिम टू कम. पर्सन, एन आर्ग्यूमेंट, क्या लड़ाई हुई थी? Holmes, his nephew Watson, I believe that his death was no accident. So क्या हुआ था? Mr. Culverton Smith and Sherlock Holmes के बीच में हुई थी आर्ग्यूमेंट. अब आर्ग्यूमेंट क्यों हुई थी? बाय मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ के नेफ्यू के ऊपर. अब व्हाई वुड he be interested in fighting with Mr. Culverton Smith over Mr. Culverton Smith's nephew? क्यों? Because जो nephew था ना Mr. Culverton Smith का, he died, ठीक है, and सबने ऐसे शो किया that his death was an accident, but he was a detective. See, Sherlock Holmes was a detective and he knew that he did not die by accident and it was a planned murder. So I believe that his death was no accident. The boy died horribly. I suspected Mr. Smith. And Sherlock Holmes के हिसाब से जो reason था ना उसके डेथ का, उसके नेफ्यू की डेथ का, वो रीजन था मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ हिमसेल्फ. इट मीन्स दैट मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ ईदर मर्डर्ड हिम और मेड अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टू मर्डर हिम, या फिर कुछ भी उनकी वजह से उसका मर्डर हुआ था या उसकी डेथ हुई थी.
So he has a grudge against me. He's a grudge against me, मतलब he will not come to me because he dislikes me, he hates me. So जो ये hatred है उसके चक्कर में he'll not come. You will soften him. You'll soften him मतलब कि तुम उससे बात करके उसका दिल पिघला दोगे. Watson, beg him, plead with him, get him here by any means. He can save me, only he. नाउ वो कहता है कि उससे भीख मांगना, रिक्वेस्ट करना, भीख मांगते रहना, बस उसको यहाँ पर ले आओ, बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु कैन सेव मी फ्रॉम दिस फेटल डिजीज. नाउ वॉटसन, आई विल ब्रिंग हिम इन अ टैक्सी. तो वॉटसन कहता है हाँ मैं उसको टैक्सी से जल्दी से लेके आता हूँ. होम्स, यू विल डू नथिंग ऑफ द सॉर्ट, यू विल परसे. तो वो कहता है कि मैं उसको एकदम से लेके आ रहा हूँ, मतलब मैं उसको जबरदस्ती करके भी लेके आऊंगा, बट आई विल ब्रिंग हिम हियर. सो होम सेज यू विल डू नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, यू विल परसुएड हिम टू कम. तुम उसको बहुत आराम से मनाओगे आने के लिए, एंड देन यू विल रिटर्न बिफोर हिम. एंड उससे आने से पहले ही तुम चले जाओगे. मेक एनी एक्सक्यूज सो एज टू नॉट कम विद हिम. डोंट फॉरगेट वॉटसन, यू वोंट फेल मी, यू नेवर डिड फेल मी. तो वो कहता है कि उसके साथ मत आना, तुम कार्लटन स्मिथ के साथ में मत आना. चाहे कुछ भी कहे वो कि साथ में चलते हैं या मुझे साथ में जाना है, तो तुमको एक्सक्यूज दे देना, नहीं दैट आई हैव सम वर्क टू डू, आई हैव सम बिजनेस, आई हैव टू बी देयर. बट उसके साथ मत आना, उसके आने से पहले यहाँ से चले जाना. एंड मुझे फेल मत करना, प्लीज उसको यहाँ पर ले आना, बिकॉज यू हैव नेवर फेल्ड मी बिफोर इन लाइफ एंड आई नीड योर हेल्प दिस टाइम एंड आई नीड इट सो मच. सो अब सीन थर्ड स्टार्ट होता है. ये कार्लटन स्मिथ के घर पे है. अभी तक शेरलॉक होम्स के बेडरूम में था, अब कार्लटन स्मिथ के घर पे है वॉटसन. I have come from Mr. Sherlock Holmes. He's dying. He believes that you are the only man in London who can save him. So Watson says to Carlton Smith that I have come on behalf of Sherlock Holmes. He's dying, and he knows that you're the only person in London who can save him, because he has a fatal, deadly disease that only you can cure, and only you know the cure to that disease. Smith, why should Mr. Holmes think that I could help him in his trouble? So Smith, he's acting important. So he says कि Smith कहता है कि Sherlock Holmes को ऐसा क्यों लगता है that I am the person who can help him, because I don't want to help him. I don't even want to be in any sort of contact with him. Watson, because of your knowledge of tropical diseases. क्या? किस चीज की नॉलेज? ट्रॉपिकल डिजीज. तो वॉटसन कहता है कि बिकॉज यू हैव सच नॉलेज अबाउट सुमत्रन डिजीज एंड एवरी अदर ट्रॉपिकल डिजीज, सो दैट इज व्हाई आई प्लीड विद यू टू कम एंड हेल्प माय फ्रेंड. स्मिथ, इज ही पेल, इज हिज स्पीच रैम्बलिंग? क्या वो पीला पड़ा हुआ है? क्या उसकी जो स्पीच है वो लड़खड़ा रही है? वॉटसन, ओकेजनली, हाँ थोड़ी थोड़ी. Smith, this sounds serious. Even though he's no friend of mine, I'll come at once. You can rely upon me being there within half an hour at most. तो स्मिथ कहता है कि मुझे सीरियस लग रही है ये चीज़, एंड जबकि ही इज़ नॉट अ फ्रेंड ऑफ माइन, बट स्टिल आई कम एंड यू कैन रिलाई ऑन मी. आई बी देयर इन हाफ एन आवर. So now scene 3 ends. Let's start with scene 4. It is back in Sherlock Holmes' bedroom. Now Holmes he says to Watson, well, did you see him, Watson? तो वो Watson को बोलता है कि तू उससे मिला? Watson says yes, he is coming. तो Watson उसको बोलता है कि हाँ वो आ रहा है. Holmes, admirable Watson, admirable. You are the best of messengers. You can now disappear from the scene. तो Holmes कहता है कि you are one of the best people who know how to persuade the other person to come. सो वो कहता है कि अब तू बस यहाँ से चला जा, बिकॉज आई नीड टू टॉक टू हिम सम अबाउट सम पर्सनल थिंग एंड आई डोंट वांट यू टू बी इन दिस सीन सो दैट ही माइट नॉट बी एबल टू बी कंफर्टेबल टू टॉक टू मी इन फ्रंट ऑफ यू. वॉटसन, आई मस्ट वेट एंड हियर हिज ओपिनियन. होम्स, तो वॉटसन कहता है कि मुझे यहाँ पे रुकने दे, मुझे उसकी बात सुननी है कि तू कैसे ट्रीट हो पाएगा. Holmes, of course you must, but I have reasons to suppose that his opinion would be much more frank and valuable if he imagines that we are alone. So Holmes कहता है कि हाँ, I know that you want to be here, but I think that his opinion will be frank and valuable. उसका जो opinion है स्मिथ का, it will be much more frank and clear if he thinks that we are the only people in this room and there's no other person here. सो देयर इज अ रूम फॉर यू बिहाइंड द हेड ऑफ माई बेड. तो मेरे बेड के पीछे भी एक रूम है, तो वहां पर जाके छुप जा, बट तू सब कुछ सुनता रही हो, अपने कान खोल के रखियो, बट प्लीज डू नॉट शाई अवे. ऑलवेज लिसन, ऑलवेज कीप योर ईयर्स ओपन एंड सुनता रहियो वो क्या बोल रहा है. एंड डोंट बज. डोंट बज मतलब मूव मत करियो, उसको पता नहीं लगना चाहिए कि तू यहाँ पे है. वॉट एवर हैपन्स, डू यू हियर? डोंट स्पीक, डोंट मूव, जस्ट लिसन विद ऑल योर ईयर्स. नो मैटर इफ आई, इवन इफ आई डाई,
Do not move, do not speak, just listen, just keep your ears open, do not even open your mouth, do not even move. Now, Watson hides in the room behind the head of the bed. Watson जाके छुप जाता है, स्मिथ आता है, नॉक करता है डोर पे, और होम्स से उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता, तो वो बोलता है, होम्स, होम्स, कांट यू हेयर मी, होम्स? होम्स कहता है, इज दैट यू मिस्टर स्मिथ? आई हार्डली डेयर्ड होप दैट यू वुड कम। तो होम्स कहता है, शर्लॉक होम्स कहता है कि आप हो क्या कल्वर्टन स्मिथ? आई नेवर थॉट दैट यू वुड कम। स्मिथ, डू यू नो व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तो स्मिथ अंदर आता है, उसके पास खड़ा होता है, कहता है कि तुझे पता है तुझे क्या बीमारी हुई है? होम्स, द सेम डिजीज दैट विक्टर हैड। जो सेम डिजीज आपके नेफ्यू को हुई थी ना, विक्टर को, मुझे वो सेम डिजीज है। तो ये शर्लॉक होम्स बोलता है। स्मिथ, विक्टर वॉज अ डेड मैन ऑन द फोर्थ डे। जब वो कहता है कि स्मिथ कहता है शर्लॉक होम्स को कि जो उसका नेफ्यू था विक्टर, वो डिजीज लेने के फोर्थ डे पे ही एक कॉर्प्स बन गया था। क्या बन गया था? कॉर्प्स बन गया था, या एक मुर्दा बन गया था। A strong, hearty young fellow. It was certainly, as you said, very surprising that he should have caught a tropical disease in the heart of London, a disease too of which I had made such a special study. Quite a coincidence, Holmes. तो स्मिथ कहता है कि विक्टर तो फोर्थ डे पे मर गया था, पहले तो इतना ज्यादा, इतना हट्टा कट्टा आदमी था। इट वॉज सर्टनली, एज यू सेड, बहुत सरप्राइजिंग थी ना ये चीज कि विक्टर को ऐसी बीमारी हो गई, और वो भी ही वॉज इन लंदन, ही वॉज नॉट इवन इन सुमत्रा। सो अ डिजीज इन द हार्ट ऑफ लंदन, लंदन के बीच में। तो और वो भी डिजीज वो जिसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी डिस्कवरी कर रखी है। सो इट इज क्वाइट अ कोइंसिडेंस, होम्स। सो बहुत सरकाजम में बोल रहा था। किस वे में बोल रहा था? सरकाजम में बोल रहा था ये होम्स, सॉरी, स्मिथ। नाउ होम्स, आई नो हाउ यू किल्ड विक्टर। तो होम्स कहता है कि होम्स वाज अ डिटेक्टिव, ही न्यू दैट इसने ही मारा था अपने नेफ्यू को, विक्टर को। तो वो कहता है कि आई नो हाउ यू किल्ड विक्टर। स्मिथ, ओ यू डू यू? वेल, you can't prove it anyhow. But what do you think of yourself spreading reports about me like that and then crawling to me for help the moment you are in trouble? What sort of game is that, huh? तो स्मिथ बोलता है कि तुझे पता है मैंने उसको कैसे मारा था, बट स्टिल यू कैन नॉट प्रूव इट। एंड तू अपने आप को समझता क्या है? तू मेरे बारे में रूमर्स फैला रहा है कि मैंने उसको मारा है, और उसके बाद तू मेरे से ही हेल्प मांग रहा है जब तुझे कोई बीमारी हुई है। और तू अपने आप को समझ क्या रहा है? तुझे लगता है कि मैं तेरी हेल्प करूंगा इस पॉइंट पे? होम्स, गिव मी वाटर। तो होम्स ना, ही वाज आउट ऑफ ब्रेथ, एंड ही वाज एक्चुअली इन द मिड्स ऑफ दैट फेटल डिजीज, सो ही वाज आस्किंग फॉर वाटर फ्रॉम स्मिथ। स्मिथ कहता है, यू आर वेरी नियर टू योर एंड माय फ्रेंड, but I don't want you to go till I have a word with you. That's why I give you water. Pours him some water. There, don't slop it about. That's right. Can you understand what I say? तो स्मिथ कहता है कि तू बस मरने ही वाला है, बट मैं तेरे से बात करूंगा, उसके बाद ही तेरे को मरने दूंगा, एंड इसीलिए मैं तुझे पानी दे रहा हूँ। तो उसको पानी देता है, एंड वो बोलता है कि इसको ना गटक मत, हल्के हल्के पी। होम्स, यस, डू वॉट यू कैन फॉर मी, क्योर मी एंड आई फॉरगेट वॉट आई नो। सो होम्स कहता है कि बस तू मेरे को क्योर कर दे, एंड मैं भूल जाऊंगा कि मुझे पता है कि तूने कैसे मारा है अपने नेफ्यू को, विक्टर को। स्मिथ, यू कैन फॉरगेट इट और रिमेंबर इट जस्ट एज यू लाइक, यू वोंट लिव टू स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स। तो वो कहता है कि तेरी मर्जी है, तुझे भूलना है भूल, तुझे याद रखना है याद रख, because you will not be alive for long, and you'll not be able to stand in the witness box in the court to prove that I was the one who killed my nephew Victor. You'll soon be in quite another shaped box, my good homes, I assure you. तो कहता है कि तू भी एक कास्केट में, एक मतलब जैसे जो क्रिश्चियंस की क्या वो होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, दैट व्हेन दे डाई दे आर नॉट, दे आर बेसिकली बरीड इन अ कास्केट। तो तू भी एक कास्केट में होगा बहुत जल्दी, आई एम अश्योरिंग यू। इट मैटर्स नथिंग टू मी दैट यू नो हाउ माई नेफ्यू डाइड, इट्स नॉट हिम वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स यू। तो उसने कहा कि इट डजेंट मैटर कि मेरा नेफ्यू कैसे मरा, बिकॉज इट्स यू, इट्स योर टाइम टू डाई। Now, Holmes, yes, yes, but please give me water, please help me, give me something to kill the pain. तो होम्स कहता है कि but please मुझे पानी दे दो, कुछ भी दे दो, just to kill this pain, because this pain is getting out of my hands. Smith, painful is it? Yes. Victor did some squealing towards the end too. Your legs feel cramped, I suppose. तो स्मिथ कहता है कि दर्द हो रहा है तुझे? Yes, मेरे नेफ्यू को भी हुआ था जब उसकी डेथ होने वाली थी, एंड तुम्हारे लेग्स में भी क्रैम्प्स पड़ने पड़ते लगते हैं, आई सपोज। होम्स, yes, yes, such painful cramps. तो होम्स नाउ, होम्स जो था वो कहता है कि हाँ बहुत ज्यादा पेनफुल क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। स्मिथ,
Can you remember any unusual incident in your life just about by the time your symptoms began? Did anything come by post or box by chance? तो वो कहता है कि तुझे कुछ याद है क्या कि जब ये तेरे को बीमारी हुई तो तेरे जो मेल थी उसके अंदर तेरे को कुछ पार्सल जो आया था उसमें तेरे को बॉक्स मिला होगा एंड तूने वो बॉक्स खोला होगा. होम्स, आई एम फेंटिंग, आई एम गॉन. तो होम्स कहता है कि मैं बेहोश हो रहा हूँ, बेहोश हो गया हूँ, बस ऐसे बोला उसने. स्मिथ, यू शैल हियर मी. Do you remember a box, an ivory box? It came on Wednesday. You opened it. Do you remember? तो स्मिथ कहता है कि तुझे मेरी आवाज आ रही है क्या? तुझे एक बॉक्स याद है, एक आइवरी बॉक्स तुझे वेंसडे को मिला होगा और तूने उसको खोला होगा. डू यू इवन रिमेंबर? होम्स, यस आई ओपनड इट. देयर वाज अ शार्प स्प्रिंग इनसाइड इट. सम जोक. तो होम्स कहता है कि हमने खोला था, उसके ऊपर उसके अंदर एक शार्प स्प्रिंग था. Smith, it was no joke, as you will find to your cost. You fool, who asked you to cross my path? If you had left me alone, I would not have hurt you. So Smith कहता है कि अरे कोई जोक नहीं था, वो मैंने ही तो तेरे को भेजा था. And it was me who had sent that box. And जो उसके अंदर spring थी ना, जो needle थी, it was for you to contract this disease, this fatal disease. And किसने तुझे कहा था कि तू मेरे से पंगे ले? अब तूने मेरे से पंगे लिए तो you'll have to take the consequences of that. Holmes, I remember the spring, it drew blood. This box on the table. तो होम्स कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया, वो स्प्रिंग उससे मेरे को ब्लड निकला था और टेबल पे जो बॉक्स पड़ा है ये यही बॉक्स है. स्मिथ, द वेरी वन बाय जॉर्ज, एंड इट मे एज वेल लीव द रूम इन माय पॉकेट. तो वो बॉक्स को अपने पॉकेट में डाल देता है. देयर गोज योर लास्ट shred of evidence, but you have the truth now, Holmes, and you can die with the knowledge that I killed you. You knew too much of the fate of Victor Savage, so you had to share it. You are very near to your end, Holmes. I will sit here and I'll watch you die. तो स्मिथ कहता है कि हाँ अब तेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं होगा बिकॉज आई एम टेकिंग दिस एविडेंस विद मी. एंड ये तेरा लास्ट श्रेड था, ये बॉक्स लास्ट श्रेड था एविडेंस का. एंड नाउ दिस इज गॉन टू. एंड अब you can die in peace knowing that I was the one who killed you. And I killed you just because you knew too much about the life of Victor Savage. Victor Savage था कल्टरन स्मिथ का नेफ्यू. एंड तुझे इतनी ज्यादा चुल थी ना उसकी सारी चीजें बताने की, that how he died and how I murdered him. So now this is the same fate that you'll go through and I am going to murder you. Holmes sits up in bed and calls out in a confident voice, all is in order and this is your man. So now you get to know that Sherlock Holmes was a detective. So all this that he was doing कि मेरे को एक disease हो गई है and everything, he was just pretending. This was all fake. उसको कोई disease नहीं हुई थी. This was all a setup. एंड उसने उस बंदे को अपने घर ही इसलिए बुलाया था बिकॉज उसके रूम के पीछे पुलिस छुपी हुई थी. एंड वॉटसन को भी इसलिए पीछे हाइड करने के लिए कहा था ताकि वो उसके मुंह से डायरेक्टली प्रूफ निकाल पाए दैट ही वाज द वन who killed his nephew and now was in line to kill Sherlock Holmes. So होम्स एकदम से कूद के आराम से उठ के बैठता है और चिल्ला के बोलता है तेज आवाज में, बिल्कुल अच्छी आवाज में, ऑल इज इन ऑर्डर एंड दिस इज योर मैन. इंस्पेक्टर मॉर्टन अपीयर्स फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन. अब इंस्पेक्टर आता है कर्टन के पीछे से. मॉर्टन, कल्वर्टन स्मिथ, आई अरेस्ट यू ऑन द चार्ज ऑफ द मर्डर ऑफ विक्टर सैवेज. और फिर उसके बाद वॉटसन भी बाहर निकलता है. डॉक्टर वॉटसन जो फ्रेंड था and colleague था, appears from behind the bedhead and the attempted murder of Sherlock Holmes. and वो उसको इंस्पेक्टर मॉर्टन के ही लाइन को आगे बढ़ा के बोलता है and the attempted murder of Sherlock Holmes. By the way, the prisoner has a small box in the right hand pocket of his coat which would be sensible to remove. So अब वो बोलता है उसको क्या कहते हैं, डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं इंस्पेक्टर मॉर्टन को कि इस इनके जो राइट पॉकेट है, राइट हैंड पॉकेट है अपनी कोट के, उसके अंदर एक स्मॉल बॉक्स है जिसके अंदर कोई चीज है जो एक कम्युनिकेबल डिजीज है, तो उसको आप निकाल दो तो इट वुड बी बेटर. आई वुड हैव हैंडल इट केयरफुली इफ आई वर यू. पुट इट डाउन हियर, इट मे प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ट्रायल. सो बोलता है कि इफ आई वाज यू इंस्पेक्टर मॉर्टन देन आई वुड गेट रिड ऑफ दैट बॉक्स वेरी सेफली बिकॉज that box would actually play a very important part in this trial while in court. Inspector Morton leads Culverton Smith away. तो वो Culverton Smith को ले जाता है. Holmes, my dear Watson, I owe you 1,000 apologies. To think that I had to fool you in believing I was sick.
तो होम्स कहता है कि आई एम सॉरी वॉटसन एंड आई ओ यू 1,000 apologies because I made you worry and I made you think that I was on the verge of dying, but I'm not. But I had to do this. I had to actually pretend that I was dying because you would not be able to help me out if I told you that I was just pretending and I was going to get this person caught. वॉटसन बट योर अपियरेंस होम्स योर घासली फेस. तो कहता है कि बट तू सही में ऐसे लग रहा है देखने में दैट यू अबाउट टू डाई, योर हॉरिड अपियरेंस. इसका क्या होम्स? 3 days of not eating anything at all does not improve one's beauty, Watson. तो मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया इसी रीजन से, because I had to pretend that I was dying, and for the rest there's nothing which a sponge may not cure. और नहा लूंगा तो नॉर्मल हो जाऊंगा. with Vaseline upon one's forehead, अपने फोरहेड पे वैसलीन लगा लूंगा. बेलाडोना इन वंस आई. बेलाडोना मतलब एक ड्रग होती थी मेड फ्रॉम अ वेरी पॉइजनस प्लांट यूज्ड टू डायलेट द प्यूपल्स ऑफ द आईज. जब बेलाडोना डाल लूंगा अपनी आंखों में तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊंगा. रोग ओवर द चीक बोन्स एंड क्रस्ट ऑफ बी वैक्स अराउंड वंस लिप्स. रोग मतलब ब्लश अपने चीक्स पे, एंड बीज वैक्स अराउंड वंस लिप्स, और लिप्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे. अ वेरी सेटिस्फाइंग इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस. Malingering is a subject upon which I have sometimes thought of writing an essay. Malingering का मतलब होता है malingering, pretending to be sick. तो वो बोलता है कि मैंने काफी बार सोचा है कि मैं malingering पर एक essay लिखूं. इसका मतलब होता है pretending to be sick, वॉटसन. बट वॉट अबाउट द बॉक्स, द वन दैट हर्ट यू. तो वॉटसन कहता है बट तूने ये तो बोला था कि एक बॉक्स था जो तूने टच किया एंड उससे तेरे को लगी थी होम्स. नो वॉटसन, आई डिड नॉट टच दैट बॉक्स. यू कैन जस्ट सी इफ यू लुक एट इट साइडवेज with a sharp spring like a viper's tooth emerges as you open it. जब तुम उस बॉक्स को ओपन करते हो ना, साइड में एक स्प्रिंग होता है, एक बहुत शार्प स्प्रिंग जैसे एक वाइपर्स का टूथ हो, एंड अगर आप उससे हाथ लगाओगे तो यू विल गेट दैट डिजीज. बट आई न्यू कि आई डेयर से it was by some such device that the poor savage was murdered. मेरे को पता था कि ऐसे ही किसी डिवाइस से विक्टर की भी डेथ हुई थी. It was clear to me, however, that by pretending that he had really succeeded in his plan to kill me, I might get him to confess. तो मुझे पता था कि अगर मैं उसको ये दिखाऊंगा ना that he had actually, gone forward with his plan and he had succeeded in killing me, so he would be able to confess. तो मैंने यही करा. दैट प्रिटेंस आई हैव कैरिड आउट विद द थरोनेस ऑफ अ ट्रू आर्टिस्ट. एंड जो मैंने फेक करा ना दैट आई एम ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, दैट आई एम अबाउट टू डाई, दैट आई डिड लाइक अ ट्रू आर्टिस्ट. एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन. एलिमेंट्री मतलब क्लासिक. So that was the chapter. I hope you understood it, and I hope you got the gist of how good a detective Sherlock Holmes was. So, which of the following words means the same as satisfy? Uh, satisfy. Sorry. It's persuade. Which of the following words is correctly spelled? Is approach. Choose the word opposite in meaning to the word whispering. Humming. Humming means singing. Who said these lines? He's dying, Dr. Watson. The landlady said these lines. For dash days he has been singing. For 3 days he has been singing. Landlady told him that she'll bring a doctor. True, she told him that she'll bring a doctor, but all he wanted to see was his friend or colleague, Dr. Watson. Whom did he want to see? His friend or colleague, Dr. Watson. Make a sentence of your own on sinking. My heart was sinking when I got the news that I almost failed. Now, who can only save Holmes? Smith. What type of disease can Smith cure? Tropical diseases. Smith was dying. False. Holmes was dying. Make a sentence of your own on knowledge. The amount of knowledge a person has decides his intellect. Who has a horrible disease? Holmes.
Who is well-known resident of Sumatra? Smith. Who was Smith's nephew? Victor. From where does the Inspector Morton appear in the room? From behind the curtain. Holmes asks Watson to keep distance from him. Mr. Culverton Smith is a plantation owner. Holmes believed that Victor's death was not. Holmes believed that the death of Victor was not an accident. Holmes owes 1,000 apologies to Watson. Dash is a subject on which Holmes has sometimes thought to, of writing an essay, malingering. Now, let's come to the question and answers. What made the landlady think that Holmes was dying? From 3 days, he had been lying on his bed looking pale and all deadly. So that is what made her believe that Holmes was dying. Why did Sherlock Holmes really want Dr. Watson to stay away from him? Because he had contracted a Sumatran and Asiatic fatal disease that he did not want his friend to get. It seems that Holmes had mentioned his suspicion about Smith to the police. Yes or no? How do you know? Yes, we know that he mentioned his suspicion about Smith to the police because he knew that Victor's death was not an accident and Smith was somehow linked to the death of Victor. So he had told the police about it because now Smith would not want to help Sherlock Holmes while he's suffering from the same disease that Smith's nephew Victor was suffering from. What did Watson observe about Smith's behavior when he told Smith about Holmes? So Smith did not want to come to Holmes' place at first, but after he said that although he's no friend of mine, I'll still be there in half an hour. Explain in your words how Smith had tried to kill Holmes. Smith had sent a box, an ivory box, by mail to Holmes on Wednesday that had a spring, a needle that was exactly like a viper's tooth. And somebody, if they put their finger on it and it pierced in their skin, it would kill them. Do you think that Smith had killed Victor Savage in the same way? Yes, we know that Smith had killed Victor Savage in the same way as mentioned by Sherlock Holmes in the story, and because he suffered the same disease and fate as what Sherlock Holmes was now going through. Why did Smith try to murder Sherlock Holmes? Because Sherlock Holmes was the only person who had the idea that Smith killed his nephew Victor, and now he was going to break it out to the police. So I hope you guys understood the chapter and you got the whole gist of it. So happy learning. Goodbye.